यूके ट्रिप पे मैं पुलिस स्टेशन गया था और ये वीडियो पहले इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि इसके लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन की परमिशन लेनी थी, सारे डिपार्टमेंट से चेकअप ये अप्रूव होके आनी थी, जिसमें टाइम लग गया जो अब आई है। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। मैं हूँ जी साउथ हॉल में और मेरे पीछे है साउथ हॉल की पुलिस चौकी और यहाँ पे मेरे को जाना है अंदर कि देखें कि यहाँ के पुलिस स्टेशन वगैरह और सेल होते कैसे हैं, पुलिसिंग कैसे होती है, और उसमें मेरी हेल्प करेंगे पाई, क्योंकि पाजी इज हाउ वुड यू एड्रेस यू? So I'm police staff. Police staff. Paji is police staff who's gonna take me inside. Absolutely. Yeah. And you're gonna make me meet some police officers. Real time? Absolutely. Let's get started. कोई कंप्लेन करने आता है वो सामने के गेट से आता है, मगर हम क्योंकि पुलिस स्टाफ के साथ जा रहे हैं तो हम पीछे स्टाफ वाले गेट से जाएंगे जहाँ से पुलिस की गड्डियाँ लग रही हैं अंदर। So I'm Ravjeet Singh. I work for the Metropolitan Police, and I work for a national unit, and I also am the co-chair of the Metropolitan Police Sikh Association. Okay. So I'm going to introduce you to a couple of colleagues of mine, police officers. First one is Suk, who works for Territorial Support. Nice to meet you. And Sergeant Navdi. Sat Shri Akal bhai. Pretty good. But you won't be speaking much in Hindi or Punjabi, right? Born and brought up here? Yes. Okay. And how about you, sir? Born and brought up here? Yeah. Also born and brought up here in the UK. Hanji, bilkul. But still speak a bit of Punjabi? Mara mota chalta hai. Mara mota chalta hai. ठीक है. But we'll get started with you. Like, what would be your department and role in the force? So I was in the TSG, which was a territorial support group. Okay. And we would basically be called to big events, protests, disorderly kind of incident. So you're the guys who dress up like in helmets and shields and everything? That's it, yes, exactly. Okay. I would love to see you in the gear, but okay, maybe you can send me a picture. Yes, maybe. I can put one. And how about you, sir? ठीक है. So I'm a sergeant. साਡਾ department हैगा learning and development L&D. ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਮੈਂ ਓਵਰਸੀ ਕਰਦਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ. Okay. ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਫੀਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ. ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਲੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैचलर ऑफ साइंस इन प्रोफेशनल पुलिसिंग भी मिल जाता, वो भी सारा फ्री ऑफ चार्ज विच. ओके. हाँ जी. आजकल तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलना शुरू हो गया है, तो बट जैसे कोई उस परमिट पे तो मेरे ख्याल से फोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता. यू हैव टू बी अ रेजिडेंट ऑफ यूके, आई बिलीव. परमानेंट रेजिडेंसी पहला मिलना चाहिए. एक बार वो मिल गया तो फिर कोई चक्कर नहीं, वो फिर अप्लाई कर सकते. जे ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਐਂਟਰੀ स्कीम भी हैगा. अच्छा, नाइस. तो बेसिकली आप जो बता रहे हो कि 12th के बाद स्कूल के बाद फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बिना ग्रेजुएशन के, क्योंकि जो आप जो करवा रहे हैं ट्रेनिंग वो एक तरीके से ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट ही है. बिल्कुल जी, बिल्कुल. कौन सी डिग्री मिल एग्जैक्टली क्या डिग्री मिलेगी आपको 3 साल कंप्लीट करने में? बैचलर ऑफ साइंस इन प्रोफेशनल पुलिसिंग. बैचलर ऑफ साइंस इन प्रोफेशनल पुलिसिंग. ओके, सही है. ये डिग्री भी आ गई और 3 साल में ट्रेनिंग भी, एंड यू आर लर्निंग ऑन जॉब एंड गेटिंग पेड फॉर इट आल्सो. बिल्कुल जी, नाले कोई ट्यूशन फीस भी नहीं देना पड़ता. अच्छा, चलो ये तो ठीक है. बाकी गेटिंग पेड से ना मेरे को क्वेश्चन कई सारे आ गए दिमाग में, क्योंकि पुलिसिंग से बात आती है एंड व्हेन वी स्पीक अबाउट हाउ इट इज लाइक prevalent when it comes to corruption or bribing or something like that, or offers, or how you find people, what kind of amounts there are. So I have a lot of questions, but we'll get to them later. We'll talk about them properly. तसल्ली से करते हैं. So vehicle seems interesting. Do you have like a kind of gear of what you would need? We do. So here we have some long shields that are used during protests or disorder. This has been used yes. quite a lot, I would say. Yes. This is the long one, and then we have the shorter shields just here. Okay. There's some other equipment like fire extinguishers, first aid kit, and police tape, very important. Yes, so this is something that you use to corner off an area. Yes, crime scene that you might need to close off a road or road traffic accident. Okay, and what would that be?
So this is a weapons tube. So should we find a knife or similar weapon, screwdriver, which we need to bring back to the station for evidential reasons, we can store it safely in here. And bring it along with us. Nice. I just met the lady here, and she's also from the administrative staff on the policing side, if I'm not wrong. Yes, so we have police officers, and you also have the business side, which are known as police staff. So you don't have to be on uniform, but you can work as police staff, as admin as well. But a lot of people, like, there have been issues like Black Lives Matter that happened in USA. So what steps does the police community here generally takes to make sure that there is no racial discrimination? And the organisation, the police, have a strategy called STRIDE, where it's all about inclusivity, diversity and engagement. Not only with diverse communities that work in the police, but also with our wider London community as well. And we also volunteer into the Metropolitan Police Sikh Association and the National Sikh Police Association. So as such, the Metropolitan Police has around 20 plus staff support associations. They're made up from various communities. The Metropolitan Police and the Mayor of London want to ensure that policing is diverse as well. तो जी बातचीत से जितना मेरे को समझ आया, बेसिकली आप लोगों का रोल ये है कि एक तो ये आइडेंटिफाई करना कि हर कम्युनिटी, जो आप कहते हैं कि जो लंदन के मेयर हैं, उनकी भी ये इच्छा है रिप्रेजेंटेड हो उसी सेम रेशो में, जिस या ऑलमोस्ट बराबर लंदन में जिस हिसाब से अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं, ताकि सबकी हो. और प्लस सिख एसोसिएशन 25 साल से जो है, इट इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स कि भाई लैंग्वेज बैरियर ना हो. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੈਲਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਰਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੂਮ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ यहाँ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅੱਛਾ ਹਨਾ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ चाह पानी की जरूरत है. ठीक है जी. Very well explained on a lighter note, but on a serious note, I want to ask कि यहाँ पे अगर कोई आता है, जैसे कस्टडी में आप किसी को होल्ड करते हैं, चौकी होगी ना, थाना तो नहीं है, तो यहाँ पे उसके राइट्स क्या होते हैं? ठीक है जी. सो थोड़े जो मैं इंग्लिश पंजाबी मिक्स होंगे. हाँ जी. 3 मेन राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स है ना. पहली गल है कि राइट हैगा लीगल एडवाइस के, मतलब तुसी मुफ्त विच तुहानू वकील दे एडवाइस मिलेगा. पहली गल आ वो सब तो वड्डी है. दूसरी गल है कि साडा हैगा कोड्स ऑफ प्रैक्टिस दी किताब, जे तुसी वो पढ़ना चाहना कि व्हाट वी कैन एंड कैन नॉट डू, वो भी किताब हैगा जी. ते तीसरी राइट ये है कि यू कैन हैव समवन इन्फॉर्म्ड. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ. ठीक है जी. बस ये है 3 मेन राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स. ठीक है जी. बट खाना वाना जैसे आप किसी को रखते हो यहाँ पे, मान लो वीकेंड हो गया तो वो किसी के आगे पेश नहीं हो सकता कोर्ट में, तो वीकेंड यही रहेगा. वीकेंड ऐसे ही रहोगे. तो फ्राइडे अरेस्ट नहीं होना है यानी. कोशिश करो फ्राइडे ना, फिर भी लोकी पुट्ठे काम करने हट दे टाइम नहीं. हां की होया जावे. सही गल है. तुसी तो डेली ही देख रहे होगे. बिल्कुल जी. चलो ओके. बट वन मोर क्वेश्चन. आई थिंक द लेडी कैन आंसर दैट क्वेश्चन इफ वी कैन हैव यू मैम. ओके. सो on an average, like, I know it's a very variable question, but it depends on 100 factors, but how many on an average arrests are made by one officer? It's hard to say because like you mentioned, it depends on different factors. You're in different teams, different focuses. So you might have a traffic department, for example, and where, you know, might be on a safer neighborhood team where you're in the community, so you do a lot of community-based things. Absolute number to डालना मुश्किल है because it depends condition to condition. But one good thing that I learned is कि आप लोग ये बता रहे हैं कि आपकी last कोशिश होती है that you arrest someone. ये पहले बात करके समझाना, avoid करना. जैसे कोई छोटे से केस के अंदर अगर कोई drunk है तो उसको किसी जगह आपने सेफ जगह पहुंचा दिया या उसे किसी रिलेटिव को किस तरीके से ढूंढ लिया, बट अगर वो अब्यूजिव या वायलेंट हो जाए तो ही आप उसको फिर अरेस्ट करें, मतलब और कोई ऑप्शन ना रह जाए. बिल्कुल जी. आप उदो ही अरेस्ट कर दे, गिरफ्तार करें जो जरूरी पैदा है. क्योंकि गल ये है कि जो आप अरेस्ट करते आप रिस्क ਨੂੰ मैनेज करदा. जिवें आप कोई डोमैस्टिक कोर्ट जाता है जिदा फॉर एग्जांपल पार्टनर भी कुट कटापा कर रहे पे, राइट, उस वेले तो पक्का 100% वो पार्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ गिरफ्तार करना ही करना. क्योंकि जे आप नहीं करते ऐसा ना होवे कि आप
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਘਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਰਿਸਕ में ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਨਿਗੇਟ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਸ਼ਾਪਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲੰਟਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ठीक है जी उस हिसाब नाल आप चलते हैं तो उसको मतलब ऑप्शन दी जाती है कि चल तूने चोरी कर ली अब तू पैसे भर दे इसके और तेरे को वार्निंग दे रहे हैं ऐसे कुछ कि अरेस्ट नहीं करेंगे या फिर अरेस्ट हो गई होगा उस केस में देखो जी ये है कि वॉलंटरी इंटरव्यू आप उन्होंने मौका देंगे कि देखो भाई आप जन वकील भी दूंगा तुसी पहुंचो ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ बाकी जी बड़ा कितना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक हाथ मेरा इस तरफ जा रहा है और इधर जाने के लिए 2 हाथ इस तरफ जा रहे हैं जो इसकी चौड़ाई ऊंचाई बहुत है फॉर अ सर्टेन रीज़न बट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग वाली है खिड़की वाला सिस्टम नहीं है ये तो बहुत ही ताले लगे हुए हैं और ये खोलने के लिए होता है कि बाई चांस अगर उसको बंद रखना है क्लोज्ड फुल्ली और चेक करना है थोड़ा सा तो इसमें से कर दिया बोथ ऑफ यू कम अक्रॉस रियली फिट so is it some kind of a fitness level that you have to maintain is it a requirement here in police yes so the basic level of fitness is 5.4 on the bleep test okay so have you heard of the bleep test is there something about BMI or something no it's actually where you run from one point to the other it's a 15-meter run okay and you continuously go so when the beep starts you run and you have to get to the other side before the beep goes again okay continuously and as the levels go up the beeps get faster okay this was like mandatory from until high school I believe yeah in the police it's the 15-meter and then each skill set that you have so for example a taser officer firearms officer public order officer will be expected to reach a higher level than 5.4 but that's the basic entry level okay so basically what you're saying is if I need to have a taser I need to have a different fitness level a higher fitness level okay यानी अगर आपके पास वेपन कौन सा है उस पर डिपेंड करता है अगर और if I have to have like be wielding a weapon of some kind like a handgun or an assault rifle then you need to have a higher fitness level to have yes because you're carrying all the equipment and okay that's why I have seen like all the people with big guns जितने बड़ी बंदूकें होती हैं they are generally like look very fit so it's a requirement yes okay Oh yeah, no, it's tea. Indian tea oh nice I made it at home especially for you guys oh lovely you got chai nice I wish mummy was yeah I'll have one for sure टाइम ऐसा हो गया तो इसलिए भी थोड़ा चाय समोसे चल रहे हैं कई जगह जी ये कहा जाता है कि पुलिस ऑफिसर्स की सैलरीज इतनी कम होती हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती अपने खर्चे चलाने के लिए एक ही आर्गुमेंट आता है कि फिर उनके लिए आसान हो जाता है जो ब्राइबरी है या रिश्वत या करप्शन के अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व होना तो यहाँ पे मैं समझना चाहता हूँ लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक पुलिस रैंक इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम लाइक द कांस्टेबल लेवल एंड गो ऑल द वे अप तो सैलरी का स्ट्रक्चर यहाँ पे और पुलिस के जनरली बेनिफिट्स क्या होते हैं इफ़ यू कैन रेफर दैट चलो ठीक है जी सो फर्स्ट रैंक इज पुलिस कांस्टेबल ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਹੈਗਾ £30,000 per year starting off then the next rank is sergeant inspector chief inspector and then superintendent level chief superintendent and then commander and then beyond commander you have the chief officers so just to give you an idea when a person gets up to chief superintendent level you're looking at around £86,000 so between the ranks obviously there is a proportionate increment but to start off with when you consider it a police officer can start PC can start at the age of say 17 I believe and with that I can't think of any other 17-year-old who's going to get paid £30,000 ओके 30 लाख रुपए साल के जो कि 17 साल की उम्र में शुरुआत करी जा सकती है और 80 लाख तक पहुंच जाते हैं टू विच लेवल वाज इट that's a chief superintendent and can it does it go like
higher also for higher rank like commissioners and everything? Yeah, absolutely. So after that you get commander. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ assistant commissioner level. So ਉਹ ਫਿਰ senior rank level ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ the most senior police officer in the country is commissioner. Commissioner. Okay. If I say an assistant commissioner, कुछ idea होगा कि कितनी सैलरी होगी यहाँ पे? I think ACP की. The ACP is something that. I think assistant commissioner level is approximately 200,000. 2 crore रुपए साल? Yeah. और फिर So then you've also got police staff ਜਿਹੜੇ police officer ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ business side of policing handle ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ pay structure should ਹੁੰਦਾ admin staff 26,000 should ਹੁੰਦੀ okay ਤੇ senior ਜਿਸ inspector level police staff ਜਿਹੜੇ rank ਹੁੰਦਾ ਉਹ 37,500 ਆ okay ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ chief inspector level ਉਹਦਾ ਹੈ around 49,000. अभी सर पुलिस वालों के साथ बैठा हूँ थोड़ा सा मतलब पूछने में हिचकिचाहट तो हो रही है मगर इन पब्लिक इंटरेस्ट आप मेरे को ये बताओ कि आप लोगों को रिश्वत ऑफर होती है? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ we cannot say ਕਿ there's absolutely no corruption ਮਗਰ in order to minimize corruption ਹਰ ਆਫਿਸਰ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਥ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਰ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਬੋਡੀ ਵੋਨ ਕੈਮਰਾ ਹੈ okay ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਸਰਚ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ okay to protect the officer and to protect the member of the public okay क्योंकि कई बारी क्या होता है जी कि आपा किसी ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ the officer is very polite ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ officer ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਿਆ officer ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ okay ये वो ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ वो आपको भी सेव करते हैं उनको भी हाँ जी बिल्कुल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ethnic minority ਜਾਂ ਕੋਈ someone who's from a black heritage ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ minority community heritage ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ safeguardingly to prevent injustice against racial disparity. जैसे यूएसए में हमने काफ़ी सुना है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी होती है उनके सर्चेज या उनको सस्पिशन से ज़्यादा देखना ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अ लोकल नेटिव वाइट अमेरिकन. इज देयर समथिंग लाइक दैट प्रेवलेंट हियर इन यूके एज वेल? So the Metropolitan Police and the Mayor of London, they're very much in looking at the disparities between stop and search and other, in terms of other policies. Okay. And there is an active drive now to one of the drives is to recruit more ethnic minority and black officers. Nice. This way we can try and serve the community better by representing the community we actually serve in. Quick question, ma'am. Like in India, only a lady police officer can arrest a lady, if I'm not wrong. Is that something that like this in UK also? No, so I can arrest a male or a female, it doesn't matter. And the gentleman can also arrest women? Correct. Okay. और लेडीज को हथकड़ी नहीं लग सकती जहाँ तक मेरा ख्याल है इंडिया में. हेयर यू हैंडकफ वुमेन, लाइक इज इट अलाउड? ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦ ਰਿਸਕ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ they are armed with a weapon in order to control that individual, yes we can apply handcuffs. Okay, regardless of whether they're men or irrespective. ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ a person may use such force as is reasonable in the circumstances for the prevention of crime. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ but it has to be proportionate. ਨਾਲੇ it's down to us to justify why. और अमरीक जी मेरे साथ बैठे हैं, इनकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया है और ये हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से जो मेरे को मेरे मीटअप में मिले थे, थैंकफुली इनसे मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि ये तो चीज़ करनी चाहिए. बट सर आप थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दो पहले कि आप डिपार्टमेंट में क्या करते हो? Yeah, so my name is Amrik Singh and I'm a Met Police officer. I've been an officer for 20 years now. Wow, 20? 20 long years, but it's been worth it. Okay, but 20 साल के बाद जो यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ एप्रिसिएशन मिलती है ना, आपको वो मिलेगी अभी? मिलती है. अच्छा, मिलती है. वो क्वीन से बाद में medal मिलते हैं. So after 20 years I receive a long service medal. Okay. And that will be given to me during a ceremony. Nice. Hopefully the ceremony will be in the next 6 months. Perfect. And what would your role be in the department? So my role is safer neighborhoods. Okay, तो अब किसी ने, मैं चलो छोटे मोटे क्राइम ही कह लेते हैं एक तरीके से जो आम आदमी कई बार कर जाता है, गाड़ी से चलते चलते कूड़ा बाहर फेंक दिया
तो कितना क्या फाइन मिल सकता है अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने देख लिया तो? फाइन तो पक्का मिलेगा। अच्छा, पक्का मिलेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन किस तरह ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਓਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਓ। ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ। और बिंदे ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, पर कई काफ़ी लोगों ने काफ़ी सामान सट देते हैं, जिस तरह मतलब फास्ट फूड दुकान दी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सामान सट देते हैं। ओके, ऑलराइट। सो उन्होंने 100 पाउंड का फाइन लग सकता है। 100 पाउंड। 100 पाउंड। ओके, और जैसे यहाँ काम होता है ना, लोग निकल रहे होते हैं सुसु आ जाता है किसी को, अब कोई अगर सड़क के किनारे इफ यू फाइंड समवन पीइंग तो उसमें क्या फाइन मिलेगा? ओ काफ़ी सख्त सज़ा, या बिकॉज एक पास से तो जे एक्सपोजर हो जाए, हाँ जी, हाँ जी, है ना, फिर वो बंदा अरेस्ट भी हो सकता है। ओके, हाँ या जे पेशाब करता पे होवे, यूरिनेशन करता पे होवे, ਉਹਨੂੰ 100 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਫਾਈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ओके, पंजाबियों की साथ लगी है तो समोसे तो चलेंगे थोड़े थोड़े। मैं कहा जी अब आए हैं तो माता जी के साथ बैठ के सारे ऑफिसर्स के साथ खाना वाना खाया जाए ना, तो हमारे होटल के बिल्कुल साथ ही होटल है, इसमें इंडियन रेस्टोरेंट है, सारे वहाँ पहुँचे। मैं मम्मी को यहाँ लेने आ गया, मम्मी ने आते ही ये पूछा कि भाई सेल के अंदर वीडियो बना गया है। मम्मी सेल में वीडियो इसलिए बना पाए क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में उन्होंने बुलाया था ना साउथ हॉल वाले में, उसमें भी रेनोवेशन चल रही है, तो इसलिए वो फंक्शनल नहीं था। वरना वो कहते हैं कि अगर फंक्शनल वाले के अंदर तो हम सेल में आपको ले जा नहीं सकते, प्राइवेसी कंसर्न भी है, क्रिमिनल देखेंगे चिल्लाएंगे, फिर आपकी भी सेफ्टी का है। आज माता जी शेरटन होटल में स्वागत है। अच्छा जी, ये सामने आपका रेस्टोरेंट है मधुज, जहाँ हम आए। अच्छा, क्या नाम है? मधुज। मधुज, वो लिखा हुआ है। जी इंडियन नाचोस आए हैं, पापड़ मसालेदार चाट। But which drink is that? The very, very mocktail. Very mocktail. Okay.